Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I am here to discuss some tips related to listening module. There are students जिन्हें problem आ रही है listening में भी 6.5 आ रहे हैं यार, it's not there, it's actually not worth it क्योंकि listening is the only module wherein you can get 9 or minimum 8. हर किसी के listening में 8 आ सकते हैं क्योंकि listening module बिल्कुल भी difficult नहीं है. If you'll do somewhere around 30 listenings तो आपको पता चलेगा कि हर एक listening में व्हाट इज हैपनिंग कि वर्ड्स भी रिपीट होने लग जाते हैं. आपको पता है अगर उन्हें होम एड्रेस की बात करनी है तो दे विल बी यूजिंग वे, ठीक है. अगर वो स्ट्रीट की बात करें दे विल से द नेम ऑफ द स्ट्रीट, सो यू विल हैव टू राइट स्ट्रीट. So slowly and steadily you will start understanding pronunciation. Here I am going to give you some tips for listening module so that you will start scoring minimum 8 in listening. Okay, so just listen carefully and watch the video till the end. Listening में भी यही ध्यान रखना है कि you have to listen carefully. Everything is about concentration here. Okay, हर एक चीज ध्यान से सुननी है. So the first step which will help you in listening module is, first thing that is going to help you is concentration. You'll have to concentrate guys what exactly they are saying, the words they are using, because the similar words will be repeated again. Education related topic है तो वो repeat होने ही होने हैं वो words, so it's better you concentrate properly. If you are unable to understand, let's say आप listening day 1 पे कर रहे हो but you are unable to understand half of the words, what will you do then? अगर आपको नहीं समझ आया so you are going to re-listen the same part again. Start making the habit of re-listening. This will help you a lot in comprehending it properly. So you'll comprehend properly and that way आपका listening में score भी improve होगा. So the first thing is concentration, second is re-listening. और re-listening कौन सा? Only the difficult part or the part which you couldn't understand. This will definitely help you in, or definitely it is going to raise your scores and your scores will uplift a lot with the help of this. So start doing this. अब देखो guys, when I'm talking about listening module, I have told you one simple strategy which I have been telling in each and every video almost. I have been explaining you this thing only, but it's just like this teacher is saying but you are not listening properly. So there are so many students who are even getting scores through the videos only. Result आ जाता है, message आ जाता है, thank you ma'am, TRF आ गया and आपकी videos देख के prepare करा. But the point is this guys, आप चाहो तो आप भी खाली videos देख के prepare कर सकते हो, but उसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है. Whatever I am teaching here, make it a point that you are making your own notes. It is going to help you a lot. So here you will be using the strategy of read, translate, underline, that is RTU. देखो, as I mentioned previously as well, we all are not native speakers of English. Obviously there are times we do not understand a word properly, there are times we are unable to understand a long sentence, ठीक है, in a proper manner. So what exactly do we need to do? We need to read the statement. Okay, so what will we be doing? We'll read the statement properly. Whatever the statement is, we are going to read it properly. Let's say any statement you have got and you will be reading it properly. Once you have read the statement, आपको उसे translate ज़रूर करना है. Now you will be saying कि मैम इतना time नहीं होता, but होता है time. 30 seconds मिलते हैं first 10 questions के लिए, at times 5 questions के लिए. So when they are giving you time, they are actually giving you time on the basis of the reading skills only. They really know that this long it will be taking for you to read the answer or read the questions. So that's what they are giving you. So 10 minutes में you can easily read small questions because first 10 तो बिल्कुल small questions होते हैं. So you just need to read the question, ठीक है. Translate करो. देखो, if you're good in translation part, like now it is the phase that when I'm not translating because translation की ज़रूरत नहीं पड़ती because I've started understanding everything. So in that particular case you can just proceed to underlining part. Okay, so read, translate, underline. You will just proceed to underlining part. Otherwise, firstly you will go through the statement and then you will translate because there are times major words use हुए हैं, must use हुआ है, should use हुआ है. This is something you really need to do. Once you have translated, you will be underlining the major keywords. Okay, so underline करोगे जो भी आपके major keywords हैं.
इन्हीं के बेसिस पे नाउ यू हैव टू लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. अब आपने ध्यान देना कि यू आर नॉट गोइंग टू लिसन फॉर एनी रैंडम इंफॉर्मेशन, यू आर गोइंग टू जस्ट लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. इट विल हेल्प यू अ लॉट गाइज एंड इट्स माई प्रॉमिस. व्हेन आई गॉट 9 इन लिसनिंग कुछ भी और नहीं करा, बस यही करा. कॉन्सेंट्रेशन के बिना नहीं होना गाइज. 8 भी आए हुए हैं लिसनिंग में और मैंने नोटिस करा कहीं ना कहीं सिंक ब्रेक हो गया था एंड आई वॉज अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम. और जब वो ऐसा हो जाता है सो 2-3 क्वेश्चंस आपके मिस हो ही जाते हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू कॉन्सेंट्रेट, you give your 100% to the concentration part. If you are unable to concentrate, make it a point that do some meditation exercises and all which will help you in improving the concentration. So अब आपने ये हमेशा करना है, read, translate, underline. Now you'll listen for specific keywords only guys. You'll not listen for any random information. You're going to listen for specific keywords. Whatever keywords you have underlined, you will be listening for these keywords only, for specific keywords. Mainly आपने focus करना है, you'll have to focus on specific keywords. And why guys? Because answer मिलना यहीं पे ही है. Be it fill in the blanks, MCQs and all, you'll have to follow the same thing. So just focus on, just listen for specific keywords. Another thing is here guys, there are some sentences wherein there are no keywords. Okay, मुझे पता है कि वहाँ पे तो मेरा आंसर है ही नहीं, कि देर इज अ स्टेटमेंट वेर इन देर इज नो क्वेश्चन इन बिटवीन. ओके, 3 लाइन्स हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. सो मुझे वो भी ध्यान से देखना नहीं, बट उसमें अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो उसको जरूर अंडरलाइन कर लेना, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि लिसनिंग एग्जैक्टली किस पार्ट पे है अभी, ऑडियो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे है अभी. योर पेंसिल शुड मूव अलॉन्ग विद द ऑडियो. जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आपकी पेंसिल मूव होनी चाहिए जैसे जैसे ऑडियो चल रही है. इट विल हेल्प यू अलॉट इन लाइक एक्चुअली बीइंग इन सिंक. आपका सिंक ब्रेक नहीं होगा, आपके आंसर्स आपको करेक्टली मिलने लग जाएंगे. ओके, सो गाइज दीज आर दी थिंग्स जो आपको लिसनिंग में डेफिनेटली हेल्प करेंगे इन इम्प्रूविंग योर स्कोर्स. सो जस्ट फोकस ऑन दिस. एंड मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड है. कॉन्सेंट्रेट तो करना ही है, देन री लिसन, बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स हैं विच यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. आपने सुन लिया बट यू आर अनेबल टू फाइंड द आंसर, यू आर अनेबल टू इवन hear those words or hear that particular part properly. So then you will be re-listening so that you'll actually start understanding words slowly and steadily. So guys just start doing this. अगर listening में problem आ रही है, just start following this. Okay, and questions पे let's say MCQs की अगर हम बात करते हैं, in MCQs somehow आपके गलत ही हो जाते हैं. So MCQs में 30 seconds का जो time मिल रहा है उसमें you'll just go through the questions. You will never go through the options, you will just go through the questions and use this strategy, read, translate, underline. Options तभी आप पढ़ोगे जब ऑडियो प्ले हो रही है. पहले सारे के सारे 6 क्वेश्चंस पढ़ोगे एंड देन इफ यू हैव सम टाइम लेफ्ट देन यू विल गो थ्रू द ऑप्शंस. मेजर कीवर्ड्स, अब मेजर कीवर्ड्स गाइज मैंने बोल दिया, बट एग्जैक्टली ये मेजर कीवर्ड्स हैं क्या लिसनिंग में, दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. बेसिकली जो मेजर कीवर्ड्स हैं वो होते हैं हमारे, इधर आई विल बी राइटिंग मेजर कीवर्ड्स आर, कोई नाउन आ गया, दैट टू सम प्रॉपर नाउन. ठीक है, कोई प्रॉपर नाउन आ गया, वो आपका मेजर कीवर्ड है. सेकंड आपका आ गया कोई एडजेक्टिव आ गया, दैट्स द मेजर कीवर्ड. कोई ईयर का नेम आ गया, वो भी एक मेजर कीवर्ड है. ठीक है, सो दीज आर दी वर्ड्स एंड देन सम वर्ब. कोई लग रहा है आपको इसी वर्ब के बेसिस पे आंसर मिलना है, तो बेसिकली ब्लैंक से पहले एंड ब्लैंक के बाद वाले वर्ड पे जरूर फोकस करो. प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव, ईयर कुछ आपका आ गया, सो यू हैव टू गो थ्रू डैट. कुछ प्लेस का नेम उन्होंने बताया हुआ है. सो एक और चीज गाइज, ये तो अपने करना है, कोई प्लेस का नेम है वो भी आप अंडरलाइन करोगे. एट टाइम्स कॉमन नाउन के बेसिस पे भी यू गेट द आंसर, सो यू नीड टू अंडरलाइन कॉमन नाउन एज वेल. सो मेनली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन नाउन्स. वी ऑलरेडी नो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ओके, बट वी आर फोकसिंग मेनली ऑन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. So if you'll start doing this, you will definitely benefit a lot. ठीक है, last thing is when we are doing fill in the blanks. Okay, so what is happening in that fill in the blanks में the word before the blank. So let's say this is the word before the blank and after the blank. Okay, it is very important because before the blank आपका हो सकता है कोई ना कोई एडजेक्टिव है. सो अगर एडजेक्टिव यूज हुआ है पहले, सो वी रियली नो कि इसके बाद नाउन ही आना है.
ठीक है. सो वी रियली नीड टू बी केयरफुल, वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. इसीलिए ग्रामर के बेसिक ये 4 थिंग्स आपको पता होनी चाहिए along with verb. अगर ये पता है you will not face any problem and definitely score improve होगा. just start focusing on it. पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है किसी में, पार्ट 2 पार्ट 3 में दोबारा करो वो सेम पार्ट, so that पूरी लिसनिंग मत करो, just do that part again. this will help you a lot in your scores. you'll be getting your desired scores easily if you'll just start focusing on this. And obviously guys, overall score is also going to increase with this thing. Okay, so I hope you are going to follow this strategy, and once you follow, do let me know is it helping you or not. If it will be helping you, do let me know in the comment section, and I'll try to make more meaningful videos and useful videos for you. So thank you so much guys for watching the video. If you really like my content delivery, and if you really like my teaching method, do subscribe my channel and share this video with as many friends as possible. Thank you.